आवाज आ रही है? ग्रेट. Just tell me if my screen is visible. Is my screen visible? Okay, great. Sorry for the inconvenience. Now let's just start camp volume 3. और आज जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है states in app. So what is states in app? जो लिखा हुआ है वो कह रहा है at its core, state in an app is any value that can change over time. Okay, so what is state? जो कुछ भी अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है. सपोज आपने देखा होगा लाइक अगर मैं ईमेल के ऐप की बात करूं तो आप उसमें अटैचमेंट्स अटैच करते हो, आप उसमें टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ लिखते हो. सो यू डोंट वांट कि आप जब भी बैक करो या फिर जब भी रिसेंट्स में ऐप डालो तो उसकी वैल्यू फिर जब आप वापस ऐप में आओ तो आपको वो सब दोबारा लिखना पड़े, राइट? तो क्या होता है कि वो आपकी स्टेट याद कर लेता है. मतलब आपका एक ऐप अभी जिस स्टेट में है उस स्टेट को रिमेंबर करना, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद दिस सेशन. ओके, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं हमारी स्लाइड्स में. दैट इज अ मैसेज दैट शोज व्हेन अ नेटवर्क कनेक्शन कांट बी एस्टैब्लिश्ड. लाइक वो भी अलग स्टेट चेंज हो जाती है. लाइक फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट, लाइक कनेक्शन वाली स्टेट दिखाता है. देन इफ वी कांट कनेक्ट देन वो नेटवर्क कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड करके एक दूसरी स्टेट दिखा देता है. लाइक टेक्स्ट बॉक्स की यहाँ पे स्टेट्स बार बार चेंज हो रही है, राइट? Again, the forms such as registration form, the state can be filled out and submitted. Like आपके पास एक ही बटन होता है, वो बटन पहले सबमिट दिखा रहा होता है एंड आफ्टर यू सबमिट वो बटन सबमिटेड दिखा रहा होता है. सो उस बटन की स्टेट चेंज हो रही है. सो so the state is like remembering in what state your app is, and जब भी अपना कोई सा भी फंक्शन दोबारा कॉल होता है वो स्टेट को याद रखता है. ओके, फंक्शंस क्या होते हैं? कंपोजेबल फंक्शंस ना बार बार रिकम्पोज होते हैं, चेंज करते हो ऐप में. दैट इज अगर सपोज मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ AMAN, सो मैं एक बार A लिखूंगा, फिर M लिखूंगा, फिर A लिखूंगा, फिर N लिखूंगा. तो इस चक्कर में मेरा जो ऐप है वो 4 बार रिकम्पोज होगा. दैट इज वो 4 बार अपनी वैल्यूज अपडेट करेगा. यानी कि वो 4 बार अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आपने डाल के रखी होगी तो वो बार बार डिफॉल्ट वैल्यूज पे आ जाएगा until and unless आपने अपने ऐप को ये स्टेट रिमेंबर माय करंट स्टेट. ऑलराइट, ग्रेट. So apart from states, what we will be covering in this session is what is text field, what is text composable, what is spacer composable. तो ये सब क्या होता है ये हम देखेंगे अपने further. End of this session we will be creating an UI. In this session we will be creating a calculate tip app. तो इस ऐप का ज्यादा फंक्शन नहीं होगा. इट इज जस्ट लाइक आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, एक वेटर आपके पास आता है, वो आपको सर्व करता है तो आप उसे टिप देते हो. मतलब एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में तो टिप का कल्चर बहुत होता है, राइट? सो हाउ मच टिप शुड बी पेड? लाइक यहाँ पे हमने एक ऐसे मान के चला है कि लाइक अपने बिल का 15% हम उसे टिप दे सकते हैं. लाइक इफ आई एम बाइंग समथिंग ऑफ 100 रुपीज, 15 रुपी टिप तो बनती है. तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमने ये ऐप बनाया है. तो अगर अपन इसके लेआउट को आप अगर फोकस करोगे तो व्हाट वी कैन सी हियर इज हमने एक टेक्स्ट डाला है कैलकुलेट टिप. उसके बाद हमने एक इनपुट डाला है दैट इज आवर नंबर कि हमारा बिल कितना है. एंड आफ्टर दैट हमने आउटपुट डाला है विच इज अगेन अ टेक्स्ट, बट इस टेक्स्ट की वैल्यूज बार बार चेंज होंगी. इस टेक्स्ट की वैल्यूज बार बार चेंज होंगी. लाइक मैंने अभी 100 फिल किया है तो वहां पर वो 15 रुपी टिप दिखा रहा है,
बट अगर मैं वहां पे 1000 प्रिंट करूंगा तो वो 150 रुपी टिप दिखाएगा, राइट? ऑल्सो इफ यू कैन सी, हमारे कीबोर्ड पे बस नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट तो होगा नहीं, हमें अपने ऐप को बताना पड़ेगा कि मुझे बस न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए. तो हाउ वी विल बी अचीविंग ऑल दिस, we'll see in further video. Okay, right. So jumping to the coding part, here I opened my an IDE, environmental developers environmental. तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया which is empty compose activity. Again this session is on jetpack compose, तो हम एक कंपोज एक्टिविटी पे ही वर्क करेंगे. लैंग्वेज ऑफ द कोड वुड बी Kotlin, और मैं इसका नाम रख देता हूँ, द नेम ऑफ आवर ऐप विल बी टिप कैलकुलेटर. ऑलराइट, so now this will, Android Studio will do its work and it is loading all the files, providing you with the backup files, which takes a little time, so be patient, right? आपका कंप्यूटर, आपका सॉफ्टवेयर हैंग नहीं किया है, वो बस लोड होने में टाइम लेता है. Be patient. ओके, सो नाउ यू कैन सी हमारी सारी फाइल्स लोड हो चुकी हैं. तो अब मैं इसमें देखूं तो ये पिछली बार के जैसा, मतलब जो प्रोवाइड करता है हेलो वर्ल्ड टाइप का, वो हमें एक हेलो नेम करके एक बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन क्रिएट देता है. तो हमें इस फंक्शन की तो जरूरत है नहीं. व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव दिस फंक्शन फ्रॉम एवरीवेयर, remove this function from everywhere, and we will create our own function which is pip time screen. ये मैंने अपना नाम दिया है, not my name obviously, मेरे ऐप का नाम, मेरे फंक्शन का नाम मैंने खुद से दिया है. अब इस फंक्शन को मैं प्रीव्यू पे भी कॉल कर लेता हूँ. टाइम screen. I forgot to mention keyword function. All right. फिर से अब what would be the functionality of my app? What would be the functionality of my app? तो जैसा मैंने बोला था, जैसे ही हमारा पेज स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले एक टेक्स्ट होगा. और टेक्स्ट क्या बता रहा होगा, टेक्स्ट वुड बी टिप कैलकुलेटर. ऑलराइट, great. And after that हम एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं to get the input from the user. ओके, और उस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूं फंक्शन edit number field, edit number field. Great. और इसमें मैं क्या करूंगा, मैं यूजर के लिए एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर दूंगा. राइट, मैं यूजर के लिए एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर रहा हूं जिसकी वैल्यू मैं अभी के लिए नल डाल देता हूं. इसमें हम फंक्शनैलिटी बाद में ऐड करेंगे, बट फॉर नाउ
मैं इसे नल डाल देता हूं और अपने पेरेंट फंक्शन पे मैं इसे कॉल कर लेता हूं, एडिट नंबर फील्ड, ग्रेट। उसके बाद मैंने गलत जगह कॉल कर लिया, राइट? मुझे इधर कॉल करना चाहिए था, ग्रेट। आफ्टर दिस मैं एक और टेक्स्ट फील्ड ऐड करूंगा और उसमें मैं क्या लिख दूंगा, उसमें मैं लिख दूंगा कि टिप अमाउंट इज राइट। परसेंटेज एस इज अ प्लेस होल्डर, मतलब मैं जो कुछ भी वैल्यू इधर पास करूंगा वो इस पोजीशन पे आ जाएगी, ऑलराइट। अब मैंने यहाँ पे टिप कैलकुलेटर एक बार लिख दिया, यहाँ पे टिप अमाउंट लिख दिया, बट देयर इज अ प्रोफेशनल वे टू राइट दीज, ओके। लाइक मैं ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी ऐसे नंबर लिख रहा हूँ, ये सब ठीक है, मेरा ऐप अच्छा दिखेगा, बट व्हेन यू आर वर्किंग विद पूरा मेरा फंक्शन हो रहा होगा, राइट? बट जब मैं मल्टीपल स्क्रीन के साथ काम कर रहा होऊंगा तब ये जो अप्रोच होगी वो बहुत वेग सी होगी, बहुत एमेच्योर होगी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉल देम बाय रेफरेंस। तो मैं वैल्यूज पे गया, वैल्यूज पे मुझे ओके एंड्रॉइड, एंड्रॉइड पे मेरे को रिसोर्सेज मिले, RES करके रिसोर्सेज फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर मुझे वैल्यू फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर इस स्ट्रिंग XML फाइल। उस स्ट्रिंग XML फाइल को मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, ओके। नाउ लेट मी जस्ट सी व्हाट, ओके ये हमारा लेआउट है, राइट? हमें ये लेआउट क्रिएट करना है। पहले लिखा है कैलकुलेट टिप, कैलकुलेट टिप हो जाएगा, टिप अमाउंट। फिर अपनी स्ट्रिंग्स बना ली, तो हम अपने जितना भी ऐप हमारा होगा, हमारा जितना भी ऐप वर्क होगा, उसमें हमारी बस ये 4 स्ट्रिंग्स यूज होंगी। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, तो हमारे ये कैरेक्टर ही यूज होंगे। अब इधर मैं सीधा ऐसे एमेच्योर्स की टाइप बुलाने की बजाय या तो इधर इस तरह बुलाने की बजाय व्हाट आई कैन डू इज आई कैन
Great. And then here, besides using this, what I can do, I can again use string resource. What string resource do is it calls the string from this XML file and use it the way we want it. Okay, tip amount. Great. Now what we have to do is now कि हम इसे एक बार रन करके देखते हैं. Again, the loading will take time. Be patient. It says there is an error in line number 45. Okay, we'll just proceed further. Okay, हमारे ये हमने जो text field add किया है, this is looking so vague. What we can do is we can add a label here. We can add one label here, and what that label will do, label will add a text like enter your bill amount. This type में हम एक text उस पे add करेंगे. Okay, so text again would be, we'll be calling it from string resource. String resource से हम मंगाएंगे और इसकी ID क्या थी, r dot string dot bill amount. All right. So हमने ये अपना टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट कर लिया है. Okay, so now I found what was the error. We haven't tried composable here. Okay, what I was saying that हमारे हर फंक्शन के आगे हमें कंपोजिबल रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को बता रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन जो क्रिएट हुआ है दैट इज कंपोजिबल फंक्शन. व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ इट? हम जितने भी कंपोजिबल फंक्शन बनाएंगे ना, हम एक कंपोजिबल फंक्शन को वाया अ कंपोजिबल फंक्शन
Okay, guys, now we'll be having one event, one quiz. Okay, so get ready to participate. अपने अपने फोन पे आप ये क्यूआर अगर आप स्कैन करेंगे तो यू विल स्कैन कर लीजिए. Scan this QR code. Just get ready for the quiz, okay? Okay, so I think by now everyone have scanned the quiz. तो मैं इसे हटा रहा हूँ already. अमन, अभी बहुतों ने ज्वाइन नहीं किया तो अभी थोड़ी देर रहने दो. Okay. So we'll just wait for few more minutes. तब तक सब लोग जल्दी से क्यूआर स्कैन कर लो. Because obviously आपकी ये GDSC रैंक अपग्रेड करेगा और at the end of the semester we'll be providing you with gifts and merchandise of GDSC अगर आप top ranking में होते हो. So yeah, for the merchandise you have to participate, okay? Have everyone joined the quiz? So now let share your screen. Okay, so everyone have joined the quiz, I guess. So we will start soon. Okay, so the quiz is about the Android, and the questions are basic, so hopefully you all will get the answers. Answer as fast as you can, and you will get more points. So before selling out to Google, Android co-founder Andy Rubin tried to sell the operating system to following Apple, Microsoft, Samsung, or Oracle. Please answer. Last 3 seconds, guys. Okay, so Samsung is the correct answer, and most of you guessed it right. Very nice. Moving on to the next question. Okay, so let's see who got the highest score. Okay, it's Bunny, Pinky, and Atharva are the top three contestants who got the top scores. Now we will move to the second question. How much did Google pay to acquire Android? Your options are 50 million, 100 million, 70 million, or 20 million dollars.
$50 million, guys, and you all voted for the wrong answer. Majority of you. Let's see who got the highest point. Okay, it's Bunny again. Okay, Sam again on the top, and Athak Bunny followed by him. Next question. Android was initially released in which year? This would be easy. 2006, 2007, 2008, or 2009? 2008 is the correct answer, guys. It was released in 2008. Now, the top scorers. Okay, Atharv at the top, followed by Sam and Bunny. Next question. Which of the following is not the version of Android? Options are apple pie, Froyo, honeycomb, or eclair. Last 5 seconds to answer. And the correct answer is apple pie. 8 of you answered it correctly. Very nice. The top scorers will be okay, Atharv at the top, followed by Zeel and Sam. That is very nice. We have a girl. Okay, so the next question. This will be the last question, guys. In which Android version, native supporter for split screen view has been added? Android 5.0 Lollipop, Android 6.0 Marshmallow, Android 7.0 Nougat, Android 8.0 Oreo. Last 3 seconds to answer. Android 7.0 Nougat, right? So congrats to all of you who answered it right. And the score will be as follows. Okay, congrats Atharva. You are the winner for this quiz by 4511 points. Now we will continue for the session. Continue the session. Yeah, thank you for the quiz. It was a wonderful quiz. Okay, so now continuing our session. ओके तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा बेटर बनाएंगे. हाउ कैन वी डू दैट? हमने लेबल इसमें ऐड कर दिया है. लेबल, उस लेबल के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे. हम बोलेंगे कि हमारी जो कीबोर्ड है
keyboard will take only numerical values. Okay, so what is the syntax of telling the our Android app to just take only numeric values? That is uh, keyboard options, keyboard type, which is keyboard dot number. So now what will happen? This will take only numeric values. Okay, और हम ये भी इंश्योर कर लेते हैं कि हमारा जितना भी होगा वो सिंगल लाइन होगा, that no escape statement would be there. So yeah, our text field is modified. Okay, great. Let me check if any error is there. Yeah, no error. Wait, this is telling me some error is there. In line number 52. What is the issue? I don't think there should be any issue with this. Okay, we'll just move further and we'll see if there is any issue. Okay, तो हमने इतना कर लिया. Now what we will do? हम अब कैलकुलेट करते हैं. Alright, हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी टिप कितनी होगी. Okay, so we will create a private function. We will create a private function that is calculate tip. Okay, now we'll be creating a function which is, again I forgot the fun keyword, I don't know why I do this. Okay, so हम इसमें पैरामीटर्स पास करेंगे. पहला पैरामीटर होगा अमाउंट का, जिसका टाइप होगा डबल. What is double data type? Double data type मतलब न्यूमेरिक होगा, just it will be of decimal values. Okay, ये वो decimal values भी show करेगा. और tip percent अपन कर देते हैं, tip percent. So I think 15% would be enough. So this is the syntax of setting a default value. Right. Now we will what we will do, we will create a variable that is tip, or tip variable. What it will store the tip, मतलब कितनी टिप देनी है हमको, and that would be 15% of the amount. 15% of the amount would be amount into tip percent divided by 100. Right. Return tip. Now हमें एक रिटर्न टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा, एंड दैट रिटर्न टाइप वुड बी स्ट्रिंग. हम एक स्ट्रिंग टाइप में रिटर्न करेंगे, और
हम एक्चुअली करेंसी चाहते हैं ना, उससे हम चाहते हैं कि कितने पैसे हुए, तो हमें अपने न्यूमेरिक वैल्यू को करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड हाउ वी विल डू दैट, वी विल यूज नंबर फॉर्मेट. एंड नंबर फॉर्मेट में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है गेट करेंसी इंस्टेंस. एंड व्हाट दिस गेट करेंसी इंस्टेंस डू, इट विल convert your numeric value into money format. It will be string. All right, great. तुम्हारी भी बन चुकी है. Now what we will do, remember, I remember mutable state of nothing. हाँ, तो guys, हमने क्या किया है, this is our most important, like हम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, एक्चुअली आज थोड़ा सा ज़्यादा ही टेक्निकल इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू है, so pardon that. And let's continue with our topic. Okay, now what we will do, we will create another variable amount, and what we will store here, we will store the value of amount input, like
amount input will be storing the value which user passes, but amount will be storing the value which is stored in the amount input. But what if like that value is not up to the standards? Like हमें न्यूमेरिक इनपुट चाहिए, टिप कैलकुलेटर पे बोला है, लेकिन वो अगर कोई सिंबल डाल दे तो दैट वी कांट कैलकुलेट, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे टू डबल और null, right? Like okay, so what we are doing here, मैंने अपने कंप्यूटर को बताया है, मैंने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को बताया है कि अगर अमाउंट इनपुट की क्योंकि अमाउंट इनपुट पे जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग होगी, तो उसे डबल में कन्वर्ट करो, और अगर वो डबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो मुझे रिटर्न कर दो नल। ऑलराइट, now another variable val tip which will store the value of the calculated tip. तो हम उसके लिए एक फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था प्राइवेट फंक्शन वो बुलाएंगे और उसके हम अंदर अमाउंट पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स बन चुके हैं। ऑलराइट, अब व्हाट वी विल डू कि यहाँ पे हमने म्यूटेबल स्टेट बना ली है, बट जो हमारी पेरेंट फंक्शन है, like not the parent function but the function which is calling all the function is step type screen, right? Like हमारे जितने भी functions हैं वो इस function के अंदर है। तो if I want my Android to remember states from this function, that is edit number field, this cannot be possible because जो edit number field है वो tip time screen से कॉल हो रहा है और उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स हैं, दैट इज हमारी जो स्टेट है वो दूसरी एक हमारी जो स्टेट्स हैं वो एक फंक्शन के अंदर हैं और वो फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर है, तो दैट इज नॉट ग्लोबल। हमें अपने स्टेट को ग्लोबल बनाना होगा कॉज सो दैट हम जितने भी अपने फंक्शंस क्रिएट करें उसमें हम वो स्टेट्स को रिमेंबर करवा पाए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कट ऑल दीज। मैंने अपनी स्टेट को यहाँ से उठाया और मैंने अपने टिप टाइप स्क्रीन पे डाल दिया। तो मैं इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेट होस्टिंग, लाइक मेकिंग स्टेट्स अवेलेबल फॉर ऑल द फंक्शंस टू ऑपरेट इज स्टेट होस्टिंग, राइट? ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, मैंने एडिट नंबर फील्ड से ये सब हटा दिया है, तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या वैल्यूज हैं? हाउ विल इट विल नो? मैं यहाँ पे इसके पैरामीटर सेट कर देता हूँ। मैं एडिट नंबर्स फील्ड पे मैं इसके पैरामीटर्स बना देता हूँ वैल्यू, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग एंड अनदर पैरामीटर दैट इज ऑन वैल्यू चेंज, और जिसका डेटा टाइप होगा that will be a function which will return nothing.
right? ओके, सो अब हमें इसकी वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ेंगी। वैल्यूज को बाय वैल्यू बुला लेते हैं, एंड ऑन वैल्यू पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज पास करते हैं। तो अब मैं अगर इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश करूं तो ये मुझे 64th लाइन पे एरर बता रहा है। मेरी 64th लाइन इज एडिट नंबर फील्ड, एंड इफ आई चेक माय एडिट नंबर फील्ड, ओके, मैंने अपने एडिट नंबर फील्ड पे पैरामीटर्स पास नहीं किए। मैंने अभी एडिट नंबर फील्ड को यहाँ पे चेंज किया, मैंने इसमें पैरामीटर्स ऐड करे, एंड मैंने उन पैरामीटर्स को तो यहाँ पे बुलाया ही नहीं। तो मैं अपने पैरामीटर्स को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। मैंने क्या पैरामीटर्स पास करे थे, अमाउंट इनपुट एंड ऑन वैल्यू चेंज इक्वल टू amount input equal to it. Right. Now if I call variable amount is never used. Okay, there is one error. Let me just figure this one out. Okay, I never called the tip function here. It's just small mistakes and they will create so much of issues. Now this is working fine, right? Now let me just look it in the emulator. Again, my emulator will take little amount of time.
Okay. I guess now my app is fully functional. Like if I type here, yeah, if you guys can see, our app is almost complete, right? हमारे पास एक कैलकुलेट टिप करके एक हेडिंग है, उसके नीचे हमें बिल्ड अमाउंट करके एक टेक्स्ट फील्ड मिल रही है जिसमें मैं अपनी कीबोर्ड से टाइप करूं तो मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूं, बट मुझे मेरे फोन में ओनली न्यूमेरिक टाइप दिख रहा है, सो आई कैन वर्क विद दिस। अब मैं चाहूं तो मैं थोड़ा सा स्पेस ऐड कर सकता हूं, राइट? मुझे इस हेडर के बाद थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे इस टेक्स्ट फील्ड के बाद थोड़ा सा और स्पेस ऐड करना चाहिए, और मुझे लगता है मुझे अपनी टिप अमाउंट को थोड़ा सा साइज बड़ा कर देना चाहिए। सो हाउ आई विल डू दैट? I will add spacer. Like after first, I will add spacer. Spacer और spacer को मैं दे देता हूँ height. और मैं इसको दे देता हूँ 16 dp की height. dp is nothing but a unit, right? और मैं टेक्स्ट फील्ड के बाद भी स्पेस दे देता हूँ. Why would I code everything like when I can just copy paste, right? Okay. Now I again build and refresh. So you can see हमने थोड़ा सा स्पेस ऐड कर दिया है, which makes it look much better. अब मैं इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करना चाहूँ अगर, तो मैं कर सकता हूँ. फॉन्ट साइज, तो मैं इसको अगेन 32 बिट दे देता हूँ. राइट. Okay guys, so this is our app, fully functional. Okay, so now if I tab on the bill amount, you can see the animation which is provided by the Android Studio itself. अब मैं यहाँ पे I went to a restaurant, अब मैंने 100 रुपए का बर्गर ऑर्डर किया, so the app is suggesting मुझे 15 रुपए की टिप तो मिनिमम देनी चाहिए. मेरा मन किया तो मैं दे दूंगा. अगेन अगर मैं 1000 रुपए का कुछ ऑर्डर करूँ तो 150 रुपए की टिप ही ऑफर करने को बोल रहा है. मैं चाहूँ तो मैं कर दूं, मैं ना चाहूँ तो मैं क्यों ही करूँ. ओके, सो दिस वाज ऑल. हमारा एक फुली फंक्शनल ऐप बन चुका है. अगेन इफ आई show you what my emulator can do, emulator holds every app which you can have it on your phone,
और जो हमने बनाया वो था टिप कैलकुलेटर। Great. 100 rupee of bill and 15 rupees should be the tip amount. I guess we are done. हमने अपना fully functional app एक बना लिया है and now I think we are ready for another quiz. Okay, hello guys, welcome again. And we have another quiz on Android. So I would request you all to scan the QR code on the screen and join the quiz. Please everyone scan the QR code and join. Okay, so I guess everyone has joined. Can we start the quiz? We will start the quiz. Okay, so most of you have joined and we are going to start it. Okay, the first fully 64-bit compatible version of Android is Android 5.0 Lollipop, Android 6.0 Marshmallow, Android 7.0 Nougat, Android 8.0 Oreo. The correct answer is Android 5.0 Oreo, Lollipop, and 5 of you have answered it correctly. On the top is KP03, whoever it is. Congrats. Moving on to the second question. One of the main reasons why Android devices require more RAM memory is because it is multitasking, because it uses Java's garbage collector, because both 1 and 2, or none of these. Okay, and the right answer is because it uses Java's garbage collector. And two of you are right. Let's see the scoreboard. Okay, so Summit is at top, followed by KP03 and OS. Okay, moving on to the third question. Facebook bought Instagram in which year? This would be easy for you all. 2012, 2013, 2014, or 2015?
Okay, so the right answer is 2012 with the most votes, right? Now moving on to the leaderboard. Let's see who is at the top right now. At top we have Samir again. At second we have Dean. And at third we have Akshay. Okay, nice. Moving on to the fourth question. Which Android version was released in the year of 2015? The options are Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, or Android 9.0. The correct answer is Android 6.0 with the most votes. Now moving on to the scoreboard. We again have Sameep on the top and followed by Athar and Dhruva. Okay. Last question. Kotlin was developed by options are Oracle, Microsoft, Apple, JetBrains. Okay, the correct option is JetBrains with the most votes. Now the final scoreboard will be okay. That some on top again. Okay. So congratulations, Sameep. Can we have emoji reaction from all of you guys to cheer up for Sameep? So, guys, if you have any doubts, you can post it on chat box, or you can let us know. Like you can contact Aman Singh Bhadoriya, or you can contact me if you have any doubts related to today's session. Also, guys, thank you for attending today's event, and we'd like to notify you all that we have rescheduled the Developer Plus Plus workshop on 22nd and 23rd September, and from 5 p.m. onwards in Seminar Hall 1, C Wing. So we expect you guys will join us there too. Okay. With that said, have a good night. Okay, thank you all for being such a amazing audience. And hope you guys liked the session. Thank you and good night.